Now see the speed of sound. Sound's speed is different in different medium, and temperature also affect the speed of sound. That means according to the temperature, sound's speed also different in different places. If we compare the speed of sound and light, then you will see that the speed of light is 30 crores meter per second. That within a second, light travels 30 crores meter per second. The speed of sound at 0 degrees Celsius is 332 meter per second, and at 20 degrees Celsius it is 340 meter per second. So light travels faster than sound. Now the properties of sound: intense sound and soft sound. The intensity or we can say how loudness, कितना आवाज तेज आएगा, वो हम बोल सकते हैं उसकी इंटेंसिटी. The intensity of sound depends on the amplitude of vibration. जितने ज़्यादा vibrations create होंगे उतना ज़्यादा हाई क्या होगा आपका amplitude, और जितना ज़्यादा amplitude मतलब वॉल्यूम जितना हाई होगा उतनी ही इंटेंसिटी भी हाई होगी साउंड की. Vibrations of large amplitude produce sound of high intensity. Vibrations of small amplitude produce soft sound. मतलब अगर वाइब्रेशंस क्या है, हाई है, तो इंटेंसिटी हाई होगी, और अगर वाइब्रेशंस जो है वो स्मॉल हैं तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, स्मॉल होगी, वॉइस क्या होगी, सॉफ्ट होगी. व्हेन वी हिट एन ऑब्जेक्ट हार्ड, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से क्या करो, हिट करो, देन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड. बहुत फास्ट वाइब्रेशन क्या होंगे उसमें स्टार्ट होंगे और बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, बहुत हाई प्रोड्यूस होगी. नाउ लो एंड हाई पिच्ड साउंड. यू ऑल नो दैट इंडियन म्यूजिक हैज़ 7 नोट्स. पता है ना, सा रे गा मा पा धा नी. These notes are ordered according to increasing frequency. जैसे पहले बोलोगे सा रे गा मा पा धा नी, तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ते जाती है. सा से नी तक आने में फ्रिक्वेंसी स्लोली क्या होती है, फ्रिक्वेंसीज बढ़ती हैं. ठीक है. साउंड स्टार्टिंग फ्रॉम सा कीप ऑन बिकमिंग शार्पर एंड शार्पर. मतलब सा से जब हम स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमारी जो वॉइस है वो क्या होती है, मतलब साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, शार्प होते जाता है. दिस मीन्स द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजिंग. अगर साउंड आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, वाइब्रेशंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो पिच भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. द साउंड ऑफ हाई पिच हैव हायर फ्रिक्वेंसी, है ना. अगर साउंड की पिच हाई है, मतलब पिच कब हाई होगी, जब उसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होंगी, हाई बनेंगी. फॉर एग्जाम्पल देखो, वॉइस ऑफ वुमेन. हम लोग अगर मैडम लोग क्लास में चिल्लाते तो बहुत ज़ोर सुनाई देता है कि नहीं देता, क्योंकि उनकी वॉइस जो होती है उसका पिच कैसे होता है, हाई होता है. वॉइस ऑफ कुकूज, द साउंड ऑफ मॉस्किटोज, मॉस्किटो की आवाज़ भी आपको सुनाई देती है ना. एंड श्रिल साउंड. द साउंड ऑफ लो पिच. लो पिच मतलब क्या होता है, जो साउंड आपकी थोड़ी क्या होगी, हैवी होगा. द पिच ऑफ लो साउंड फ्रिक्वेंसी इट इज़ वॉट हैवियर. द वॉइस ऑफ मैन, है ना, जो मैन्स होते हैं उनकी वॉइस कैसी होती है, भारी होती है, हैवियर होती है. रोअरिंग साउंड ऑफ लॉयंस एंड द साउंड प्रोड्यूस बाय ड्रम आर हैवी ड्यू टू द लो पिच. उसकी पिच कैसे प्रोड्यूस होती है, लो पिच प्रोड्यूस होती है. मेलोडियस साउंड एंड नॉइस. The sound which is pleasant, the sound which we like to hear, like songs, musics, that is called melodious sound. And the sound which we don't like to hear, which is unpleasant to us, is called noise, like the sound of vehicles, sound of loud sound of music, and that is what, noise. Okay. Then non-harmonious vibration produce noise. Non-harmonium means what? Sound is not equalized. Frequencies are not same. Sometimes frequencies, somewhere frequencies are high, then somewhere frequencies are low, then high, then low. That is, sound is not harmonious. Why जो frequencies है, sound है, वो एक जैसी नहीं आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, नॉइस. ठीक है. हारमोनियस वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशन आपकी एक जैसी प्रोड्यूस होती है कंटिन्यूसली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हारमोनियस वाइब्रेशन. दैट हैव अ फिक्स्ड रिलेशनशिप विथ ईच अदर प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड. द वाइब्रेशन ऑफ
Different musical instruments have are the example of melodious sound, like the sound of flute, harmonium, then tabla, guitar. Okay, so these are what? Melodious sound. While the sound of fire bullet, sound of vehicles is what? Noise. The sound produced by different musical instruments. We are familiar with different kind of musical instruments. सबको पता है ना musical instrument कौन कौन से होते हैं. Musical instruments are mainly of three types. कौन कौन से हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब क्या? जैसे गिटार हो गया, गिटार है, बीना है. सो दैट इज़ व्हाट? स्ट्रिंग, जिसमें एक आपका स्ट्रिंग तार बंधा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ हैविंग स्ट्रिंग. रीड, रीड जैसे आपका फ्लूइड्स बोल सकते हो, रीड है ना. और उसके बाद फिर आपका है मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. मेम्ब्रेन मतलब क्या हो गया? तबला, ढोल. तो इसमें क्या होता है आपका? मेम्ब्रेन, जिसमें स्किन लगी होती है. तबला हो गया, ढोल हो गया, ये क्या आपका? Musical instrument with membrane. So in instruments having string, the strings are made to vibrate by rubbing or scratching. मतलब जैसे आप गिटार बजाने तो कैसे करोगे? उसके ऊपर फिंगर्स को रब करते हो, ऊपर नीचे फिंगर्स चलाते हो, उसको खींचते हो, छोड़ते हो, स्ट्रेच करते हो, छोड़ते हो. So the musical instrument having a string are made to vibrate by rubbing or stretching string. Sitar, veena, violin, examples of these. Then in reed musical instruments an air column vibrates. जैसे फ्लूट, बांसुरी देखियो, बांसुरी में क्या है? एयर कॉलम्स होते हैं, मतलब होल्स होते हैं, उसमें से क्या होती है? एयर पास होती है. एयर इज ब्लो इन द रीड. बांसुरी में हम लोग क्या करते हैं? एयर ब्लो करते हैं. एंड फ्लो थ्रू द रीड लाइक इन फ्लूट. देयर इज अ वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन इन द मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम, ढोलक एंड मृदंग. ठीक है, इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है. यू वुड हैव सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक मंजीरा. मंजीरा देखियो, जो हाथ में रख के बजाते हैं ना हम लोग, पूजा वूजा होती है, मंजीरा हाथ में बजाते हैं. ठीक है. फिर घंटा, वो हम लोग घंटी बजाते हैं मंदिरों में, है ना. सो दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय हिटिंग और टैपिंग दैम. घंटी हम कैसे बजाते हैं? घंटी के अंदर जो बैल होती है उसको हम जोर से हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है. जल तरंग, मैंने अपने एक वीडियो में आपको दिखाया था. जल तरंग, छोटे छोटे बॉल्स में पानी भर देते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं? बीट करते हैं स्टिक से, है ना. तो वो क्या आपका? जल तरंग. बैल, स्कूलों में आपकी घंटी होती है ना. आर एग्जाम्पल ऑफ सच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. द साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन. द थ्रोट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ साउंड इन ह्यूमन बींग. हमारी आवाज़ कहाँ से आती है? थ्रोट से. अ नैरो स्लिट इज फाउंड बिटवीन द टू वोकल कॉर्ड्स. हमारे जो थ्रोट है उसमें क्या होते हैं? टू वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इन द थ्रोट बाय फॉर पासिंग एयर. तो जब हम बात करते हैं तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, टू वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उसमें से क्या पास होती है? एयर. व्हेन द एयर फ्रॉम द लंग्स passes through the slit with the force, then the cord start vibrating. तो जब एयर लंग्स उसमें फोर्सफुली पास होता है तो वो वाइब्रेट करना, मेम्ब्रेन जो है वहाँ की वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है एंड साउंड प्रोड्यूसेस. द मसल्स अटैच टू द कॉर्ड कैन इंक्रीज और डिक्रीज टू पुल ऑन दैम. नाउ वन लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ एन अडल्ट मैन इज 20 mm and the length of cord in the woman is approximately 5 mm smaller than men. The vocal cord of children are very small, that is why their voice is quite sharp. अगर vocal cord आपका क्या है? देखो मैंस का 20 mm बता रहा है, तो vocal cord बड़ा है, लार्ज है ना, इससे उनकी साउंड कैसे, वॉइस कैसे होती है? हैवियर होती है, लो पिच होता है. वुमेंस का जो वोकल कॉर्ड है वो कैसा होता है? 5 mm, इसलिए उनकी जो पिच है वो हाई होती है और वॉइस कैसे होता है? हाई होता है. चिल्ड्रंस का जो वोकल कॉर्ड है और थिन होता है, इससे उनकी आवाज़ और शार्पर होती है. ठीक है. द साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल. मैनी एनिमल लाइक द डॉग, काउ, गॉट एक्सेट्रा प्रोड्यूसेस साउंड विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड्स. बट ऑल एनिमल डू नॉट हैव वोकल कॉर्ड्स. सभी में वोकल कॉर्ड्स नहीं होते हैं. द बर्ड प्रोड्यूसेस. बर्ड कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूसेस साउंड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वोकल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट इन देयर ब्रीथिंग ट्यूब. उनकी ब्रीथिंग ट्यूब में ही स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं. फ्लाइज प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स फास्ट. ठीक है.
And the frog produces sound of croaking, sound with the help of its vocal cord. Some fishes generate sound by pushing air out of their air bladder. Snakes do not have vocal cord. सांप में vocal cord नहीं होता snakes में. So, but produces sound by pushing air out of their mouth. And this is our chapter finished here. Okay. So after this explanation, one small video I will put to show you how the sound produced in human, okay, and the animal. Question answer tomorrow I will give you, okay. Insert 2 pencils between the box and the stretched rubber. Now, plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? And what do you observe about the rubber band? Recall that the to and fro or back and forth motion of an object is termed as vibration. When a tightly stretched band is plucked, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. That is the case with musical instruments. Can you identify the vibrating part used to produce sound in these instruments? Guitar, veena, stretched string. Tabla, stretched membrane. Flute, air column. Mouth organ, air column. Drum, stretched membrane. Jal tarang, vibrating glass. Piano, strings. We see that a vibrating object produces sound. Now, that was about the musical instruments and other objects. How is sound produced in humans? In humans, the sound is produced by the voice box or the larynx. Put your fingers on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. This part of the body is known as the voice box. It is the upper end of the windpipe. 2 vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different from that when they are loose and thick. Let us see how the vocal cords function. The vocal cords in men are about 20 millimeters long. In women, these are about 5 millimeters shorter. Children have very short vocal cords. This is the reason why the voices of men, women, and children are different.